Okay, so hello students, I hope all of you are doing perfectly well and your preparations are going good. तो जो भी बच्चे जून 2024 CSR एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं for them the whole course which costs 33,999 is now available at only 10,155. All you have to do is to use the promo code SOURAV, which is my name, to avail this offer. So do hurry up because it's a limited period of. After that, we can initiate solving some questions like from EMT, which is like a very good subject and it covers a greater portion of the syllabus. So weightage from this part is very, very high. So let's start solving some questions from EMT. Okay. The question says a ray of light in region 1 a ray of light incident in region 1 in XY plane. In XY plane is incident at a semicircular boundary that carries no free charge. Okay, I should try this. A ray of light in region 1 in XY plane is incident in a semicircle boundary, semicircular boundary that carries no free charge, that carries no free charge, that carries no free charge, no free charges. Then the electric field at point, the electric field at point P of R naught comma pi by 4, P of R naught comma pi by 4 in plane polar coordinates is in plane polar coordinate is E1 equals to 7 ER cap minus 3 E5 cap. E1 equal to 7 ER cap minus 3 E5 cap.
That's good. Where ER cap and E phi cap are the unit vectors. Where ER cap and E phi cap are the unit vectors. Unit vectors. Full stop. Then the emerging ray in region 1 has the electric field E2. The emerging ray in region 2 has the electric field E2 parallel to its axis. Has the electric field E2 parallel to x-axis. That's very good. Then if E1 and epsilon 2 are the dielectric constants of region 1 and 2 respectively, if epsilon 1 and epsilon 2 are the dielectric constants of region 1 and region 2 respectively, are the dielectric constants of R1 and R2 respectively, then E2 by E1 equals to what? ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारा आया था, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था गेट 2014. It's a question from GATE 2014 and it's a very good question. It's a question from GATE 2014. It's a very good question. कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया कि ray of light is in region 1 in the xy plane is incident in a semicircular boundary that carries no free charge. एक बाउंड्री के ऊपर वो रे जाके गिरा है जिस बाउंड्री को एक फ्री चार्ज कैरी नहीं करता। The electric field at the point R naught pi by 4. Very good. In the plane polar coordinate system is this. Where ER and E5 are the unit vectors. Now, emerging light in region 2 has the electric field E2 parallel to x-axis. There is an adjoint figure with this question. It says, this is my y-axis, this is my x-axis. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो this is your y, this is your x. यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा है। ये एक सेमीसर्कुलर बाउंड्री हुआ। वेरी गुड। ये है मेरा एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, रीजन 1, रीजन 2। ठीक है भाई। और यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है जिस पॉइंट का नाम है पॉइंट P। ये तुम्हारा है पॉइंट P। हालांकि पाई बाय 4 मतलब तुम्हारा 45 डिग्री तो 45 में tan थीटा ये यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसे पॉइंट बोला गया है R नॉट पाई बाय 4। इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। अब ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे। देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, ठीक है, और वो है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। सो the electric field at point P R naught pi by 4 in plane polar coordinate system is given by E1 equals to this, where E2 and E5 are the unit vectors. The emerging ray in region 2 has electric field E2. जो रे एमर्ज के बाहर निकल रहा है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2 पैरेलल टू x axis. वेरी गुड। नाउ जो एमर्जिंग रे है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू x axis, मतलब मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था, वो इलेक्ट्रिक निकलने के बाद इस तरफ ऐसा चला गया, मतलब
ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई आर कैप के डायरेक्शन में है 7 और ई फाई कैप के डायरेक्शन में है -3। तो फाई कैप मतलब इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ आना चाहिए। आर कैप इज अलोंग दिस डायरेक्शन, सेंटर से आर कैप इस डायरेक्शन, फाई कैप इज दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। Right? I know that this is my radial vector. This is my radial vector. क्रॉस रेडियल वेक्टर इस तरफ होना चाहिए, तो फाई कैप इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो जो मेरा E2 वगैरह जो भी है किस तरह में है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ये मेरा E2 है इस डायरेक्शन। और दूसरा वाला जो वेक्टर है वो कहीं पे ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, ये मेरा E1 है, E1 फिर ऐसा जाके E2। अच्छा, हम लोग को एक चीज पता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कंटीन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। तो बाउंड्री बेसिकली मेरा ये है, दिस इज बेसिकली माय बाउंड्री। तो इस बाउंड्री का जो टेंजेंट है दैट इज द क्रॉस रेडियल वेक्टर व्हिच इज माय थीटा, राइट? So if I if I try to find out the tangential component of this electric field and this electric field, we can find out the value of theta. Okay. So I know that E1 is equals to 7 r cap minus 3 phi cap. Again we know tangential component of electric field is continuous across the boundary. Tangential component of the electric field is continuous across the boundary. That's the thing. तो यहाँ पे सर मुझे बताना कि इस तरफ ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इस बाउंड्री टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा फाई है, तो क्या है -3, that will be actually equals to, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं दो कंपोनेंट लूं, एक तो मैं लिख सकता हूं आर के डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है इस डायरेक्शन में। गुड। x equals to, this is my r cos theta or cos phi, y equals to r sin phi। Basically I can say E2 tangential is this. Now E2 tangential is equals to what? E2 is along this direction, this direction. इसका ये vector is along this is our vector. So this vector is an angle of 45 degree. So this angle is 45 degree. If this is 45, so this is E2 cos 45. This should be E2 sin 45. Or just because phi cap is along this direction and you are getting a component along this direction, so it should be minus E2 sin pi by 4. समझ में आया नहीं? सर समझ में नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। ये तुम्हारा सर्कल है, जरा देखना इस पॉइंट पे तुम्हारा जो आर वेक्टर है वो इस तरफ है, फाई कैप इसके परपेंडिकुलर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे इस तरफ है, ये एंगल 45 मतलब ये एंगल भी 45 है, इसका टेंजेंट कंपोनेंट ये वाला है। बट तो ये वाला क्या आएगा, अगर ये E2 है तो ये होगा E2 cos 45, ये E2 sin 45, लेकिन ये फाई कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस फाई कैप के डायरेक्शन में है, तो माइनस E2 sin 45 इज इक्वल्स टू माय -3। sin 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो E2 का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 3√2।
का वैल्यू है 3√2 मैग्नीट्यूड अगर बात करें E2 का मैग्नीट्यूड 3√2 आया। दूसरी बात हमें पता है अगर फ्री चार्ज कोई नहीं है तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D is continuous across the surface. We know that D1 dot in 1 cap plus D2 dot into cap. D2 dot into cap is actually equals to 0 here. अच्छा इस रीजन में ये जो तुम्हारा सरफेस इसका नॉर्मल वेक्टर है इस तरफ होगा माइनस आर कैप इस तरफ होगा प्लस आर कैप। रीजन 1 में है माइनस आर कैप रीजन 2 में है प्लस आर कैप ध्यान से। तो D1 dot minus r cap plus D2 dot plus r cap is basically my 0। और जरा यहाँ पे देखना हम लोग लिख सकते हैं D is equals to for linear dielectric D equals to epsilon into K into electric field E। तो हम D की जगह पे epsilon क्या लिख सकते हैं तो epsilon नॉट K is the dielectric constant of the medium। तो region 1 में है E1 into E1 dot r cap basically minus r cap चीज कर दो तो आता है that is epsilon naught 2 dot r cap I can do। सर यहाँ पे देखना कि ये जो तुम्हारा सिनेरियो है एप्सिलॉन कट जाएगा तो एप्सिलॉन 1 अच्छा E1 डॉट r cap E1 का वैल्यू बोल दिया गया है ना 7 r cap इससे r cap करूंगा तो 7 मिलेगा तो ये 7 एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू इस तरफ क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट epsilon 2 into from here I will get E2 r cap। E2 का बेसिकली जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है भाई इस तरफ। E2 हमारा r cap बेसिकली इस डायरेक्शन में है E2 मेरे इस डायरेक्शन में इसका ये एंगल कितना है 45 cos 45 है E2 cos 45 E2 डॉट r cap is equals to E2 cos 45 है। जरा यहाँ पे देखो 7 epsilon 1 is equals to epsilon नॉट नहीं रहेगा epsilon 2 into E2 का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखा था 3√2 so 3√2 into cos 45 is 1/√2। now you see 1/√2 1/√2 cancels out। पूछा क्या गया था epsilon 2 by epsilon 1 तो सर जी epsilon 2 by epsilon 1 हमारा आया है 7/3। सेम में 3 का वैल्यू काइंड ऑफ देखना 2.33 कुछ होता है so that is the correct option for this 2.33। ये ग्रेड 2004 के क्वेश्चन था कितना अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये काफी अच्छा मतलब तुम लोगों को आई कैप जे कैप को ऑफ आई कैप को उसके फॉर्म में लिखना था तो वहां सही हो लेकिन ठीक है जैसा सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑफ दिस काइंड। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ लो just have a look at this question if you don't get it।
कुछ क्वेश्चन ऐसे इंटेंसिटी के ऊपर भी आते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ये भी गेट 2024 का क्वेश्चन, एक बार यहाँ पे देखो, गेट 2014 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा गया है कि the intensity of a laser in free space is 150 milliwatt per meter square. The intensity of a laser in free space is 150 milliwatt per meter square. Meters. The corresponding amplitude of the electric field of the laser. The corresponding amplitude of the electric field of the laser. Option A says, it's basically a fill in the blanks. This volt per meter. How will you do it? We know intensity I is basically equals to half epsilon naught C into E naught square. Now, if you know the intensity, this is power by area. So you should write it is 150 into 10 to the power of minus 3. So that thing is actually equals to epsilon naught to C by 2 E naught square. तो यहाँ से I think E naught मिल जाएगा 2 into this by C into epsilon. E naught will be equals to 2 multiplied by 150 to the power of minus 3 by 8.85 10 to the power of minus 12 into 3 to the power of 8. Done. If you do this, you will get the answer nearly equals to 10 point something, 6 or 10.6 to something volt per meter. अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। Take this question. 3 fermions which can occupy any of the 4 available energy states. Consider a system of 3 fermions which can occupy any of the 4 available energy states, any of the 4 available energy states with equal probability full stop. They have asked the entropy of the system is the entropy of the system is option A kb ln2, B 2 kb ln2, C 2 kb ln2, kb ln4, and D is 2 kb ln3. अच्छा, क्वेश्चन में देखो बोला गया है 3 फर्मियॉन्स है, इसको सजाना है। कितने स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में सजाना है। कितने तरीके से सजा सकते हैं सर? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 states
and there is no restriction that I have to make the energy like this or that. बट तुम लोग को एक चीज पता होगा कि अगर हम लोग फर्मियंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक स्टेट में कितने फर्मियंस को रख सकते हो, या फिर कोई स्पिन वगैरह के बारे में बोला नहीं है, तो एक स्टेट में एक ही फर्मियन रख सकते हैं। अगर एक स्टेट में एक फर्मियन रख रहे हैं तो चार स्टेट है, तीन फर्मियन है। ये स्टेट 1 2 3 4, तीन फर्मियंस यहाँ 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 रख सकते हैं, यहाँ 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 पे रख सकते हैं। फर्स्ट इट इज ऑक्यूपाइड, फिर यहाँ यहाँ रखा, एक को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे रखा, एक को यहाँ रख सकते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। Configuration. Therefore, A is equals to KB into ln sigma. That is KB into ln of 4. 4 मतलब 2 square, तो 2 KB ln 2 हो जाएगा हमारा 2 KB ln 2। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत सारे एग्जाम्पल में आए हैं। ये सेम क्वेश्चन में बोला गया है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है गेट 2015 से, गेट 2015 से पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कहा गया है कि the space between two plates of a capacitor carrying charges, the space between two plates of a capacitor carrying charges plus Q and minus Q is filled with two different, plus Q and minus Q is filled with two different dielectric materials as shown in the figure. As shown in the figure. Across the interface of the two dielectric materials, which one of the following statements is correct? Across the interface of the two dielectric materials, interface of the two dielectric materials, which one of the following statements, which one of the following statements are correct? देखना भाई, ऑप्शन ए में बोला गया है E and D are continuous, E and D are continuous। B में कहा गया है
E is continuous, B discontinuous. E is continuous and D is discontinuous. C में कहा गया है कि E D discontinuous, E and discontinuous. वो hang on. E is discontinuous and D is continuous. And D में कहा गया है both E and D discontinuous. ये हमारा कैपेसिटर प्लेट्स हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा गया है ऐसा। यहाँ पे मान लो सारे ग्रीन है, यहाँ पे सारे दूसरे कलर। तो ये जो दो डाइलेक्ट्रिक रखा गया है इसके बीच में ये तुम्हारा प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, दो प्लेट्स हैं। तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखा है, प्लस क्यू माइनस क्यू सेम कॉन्फ़िगरेशन। इसको ऐसे पलट दो, ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट कौन सा है सर? एक सेकंड रुक जाओ, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मैंने कैसे रखे हैं? ऐसे पूरा का पूरा ये ग्रीन है, ये वाले कलर के। तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक रखा है मैंने, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये। पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में E और D में से क्या कंटीन्यूअस हो, क्या कंटीन्यूअस नहीं। That's what they have asked. Fine, देखो बेसिकली हम लोग को ये चीज पता होता है कि सर अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है तो फिर हम लगा रहे हैं जहां पर बाउंड्री दिखेगा वहां बाउंड्री लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक डायलेक्ट्रिक मीडियम है, ये एक डायलेक्ट्रिक मीडियम है, तो बीच में बाउंड्री क्रिएट हुआ है। तो इस बाउंड्री में अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखना, parallel component of E1 should be equals to parallel component of E2, कितना पता है? ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई? एप्सिलॉन 1 E1 पैरेलल बाय एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 E2 पैरेलल बाय एप्सिलॉन 2। अब यहाँ पे देखें E1 by epsilon 1 is basically E by electrical permittivity, epsilon 1 into electrical permittivity क्या होता है? D1, तो D1 parallel by epsilon 1 is D2 parallel by epsilon 2। ठीक है, तो यहां से देखो D1 parallel by D2 parallel क्या रहे? epsilon 1 by epsilon 2, that is not equals to 1 क्योंकि epsilon 1 epsilon 2 अलग अलग है। तो D1 parallel not equals to D2 parallel, पता है? Parallel component of D are not the same. What about perpendicular component of D? D1 perpendicular equals to D2 perpendicular, since sigma free equal to 0. Okay, now we know this, that's why
epsilon 1 into E1 perpendicular, epsilon 2 into E2 perpendicular, भाई E1 perpendicular by E2 perpendicular कितना आया तेरे पास? epsilon 2 by epsilon 1, epsilon 2 by epsilon 1, तो इससे क्या हो रहा है? Not equal to 1. That implies E1 perpendicular not equals to E2 perpendicular. तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम नहीं है लेकिन पैरेलल कंपोनेंट सेम है, तो क्या ये दो वेक्टर कंटीन्यूअस होंगे? नहीं। दो वेक्टर कंटीन्यूअस, एक वेक्टर कंटीन्यूअस होने का मतलब है कि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी सेम होगा, पैरेलल कंपोनेंट भी सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस कंटीन्यूअस होता, इस इंटरफेस के अक्रॉस, तो इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी सेम होते, पैरेलल कंपोनेंट भी सेम होते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी सेम आ गया सर, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंटीन्यूअस नहीं है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल कंपोनेंट कंटीन्यूअस है क्योंकि कोई फ्री चार्ज नहीं है, बट सर इसका पैरेलल कंपोनेंट कंटीन्यूअस नहीं है। जस्ट बिकॉज़ पैरेलल कंपोनेंट कंटीन्यूअस नहीं है तो डी वेक्टर भी कंटीन्यूअस नहीं। सो बोथ E and D are discontinuous, are discontinuous. That's the answer. देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है कि a plane wave x plus iy e naught exponential of a plane wave x plus iy, x cap plus iy cap, e naught exponential of I कैसे माइनस होना है? e naught exponential of I kz minus omega t after passing through an optical element, after passing through an optical element, after passing through an optical element emerges as x cap minus I y cap e naught exponential of I kz minus omega t, e naught exponential of I kz minus omega t, where k and omega are vector angle vectors. The optical element is the optical element is quarter wave plate, half wave plate, polarizer, Faraday plate. Quarter wave plate, half wave plate, polarizer, and Faraday rotator. How to understand? कौन सा वाला? देखो जो तुम्हारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बताओ, I into kz minus omega t. क्या कहा गया है?
जो हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है that is E naught exponential of I into cos kz minus omega t I into okay E naught exponential of I into kz very good ये है x plus I y ये है x minus I y फाइन अच्छा x plus I y E naught e to the power of kz minus omega t क्या लिख सकता हूँ x plus I y ध्यान से देख E naught exponential of kz minus omega t को क्या लिख सकता हूँ x cap E naught exponential of यहाँ पे एक I भी है ठीक है exponential of I kz minus omega t this thing plus y cap E naught exponential of I kz minus omega t प्लस पाई बाई टू लिख सकता हूँ अच्छा मुझे एक बात बता कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा पाई बाई टू लिखा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा e टू द पावर ऑफ a प्लस b मतलब e टू द पावर ऑफ a टू द पावर ऑफ b तो e टू द पावर ऑफ I पाई बाई टू मतलब cos पाई बाई टू प्लस I sin पाई बाई टू तो सिंपली एक I आ जाएगा है ना यहाँ पे ये जो I है इस I को मैंने अंदर घुसा लिया ठीक है EF जो है दैट इज x कैप माइनस I1 कैप E naught exponential of I into kz minus omega t जो आ रहा है सर x कैप E naught exponential of I into kz minus omega t plus y cap E naught exponential of I into kz minus omega t कौन सा वैल्यू लूं I का कौन सा वैल्यू लूं मैं थीटा का ताकि e टू द पावर ऑफ I थीटा जो मेरा आएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा वो मेरा हो जाए माइनस मतलब sin थीटा का वैल्यू माइनस वन हो जाए sin थीटा का वैल्यू माइनस वन तब होता है जब थीटा का वैल्यू होता है 270 डिग्री sin 270 is I think it's clear 3 pi by 2 ठीक है cos 270 equal to 0 तो प्लस 3 pi by 2 इसे लिख सकते हैं अब जरा देखो x कंपोनेंट जो है वो अनचेंज्ड है जो y कंपोनेंट है उसके बीच में एक फेज इंट्रोड्यूस किया गया है और वो फेज कितने का है यहाँ पे पाई बाई टू है यहाँ पे 3 पाई बाई टू है तो बेसिकली एक पाई का फेज इंट्रोड्यूस किया गया तो therefore phase introduced between the phase introduced by the system is pi तो ऑप्टिकल सिस्टम का नाम क्या है सर ये हमारे हाफ वेव अच्छा क्वेश्चन दिया है इट्स अ हाफ वेव प्लेट जो ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें तो ये बताओ अगर कोई डाउट है तो मुझसे भी पूछिए अगर डाउट नहीं है सो वी कैन एंड द क्लास इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी otherwise we can end the class okay thank you